कि ये कब ये बना, कैसे ये बना, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। And then actually sorry and man Hillary who landing and check up it was quite well suitable. इस एयरपोर्ट के चारों तरफ ना इस टाइप की फेंसिंग हो रखी है। During that time it was like a bushy well that they have to dance, they have to walk in a group up and down and then just to make plane. Okay. And I heard that some of your land was used to be yours and now it's a part of the airport. That's true. ओके तो जी गुड मॉर्निंग है दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट से। जी हाँ, मैं हूँ अभी के लिए नेपाल के लुकला एयरपोर्ट पे और यहाँ मैं पहुँचा था 2 दिन पहले। मैंने कुछ आपको यहाँ की वीडियोस दिखाई कि कैसे मैं फ़्लाइट लेके यहाँ पहुँचा था और उसके बाद मैं कहाँ रुका हुआ था, और मैंने तो थोड़ा लोकल लुकला भी दिखाया। आज की बारी है जो ये दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट है, ये मेरे पीछे की साइड पे एयरपोर्ट है, इसके बारे में थोड़े और इन्फॉर्मेशन जानने की कि ये कब ये बना, कैसे ये बना, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने यहाँ के लोकल से जानी, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि ये बात आप तक भी पहुँचे, आपको भी पता लगे इस एयरपोर्ट की कहानी। बाकी ठंडा काफ़ी हो गया है, हालांकि अभी सुबह का टाइम हुआ है, धूप अभी अभी आई है, जस्ट वीडियो बनाते हुए अभी पहली धूप की किरण मेरे ऊपर पड़ी है, नहीं तो इससे पहले मैं पूरा पैक होकर घूम रहा था क्योंकि माइनस टेम्परेचर चल रहा था। तो बाकी आज की वीडियो में हम जानेंगे इस एयरपोर्ट की स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है ये। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। थैंक यू। क्योंकि लुकला एक बहुत रिमोट जगह है तो यहाँ पे हर चीज़ को पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कुछ भी खाने की आइटम हो, ग्रोसरी आइटम हो या फिर यहाँ की फ्यूल गैस हो। तो वही रीज़न है कि यहाँ पे जो खाने पीने का रेट है वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी ये ब्रेकफास्ट जो ऑर्डर किया है, मैंने ये इसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रैकर्स ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो इसका प्राइस जो है वो नेपाली में हुआ 900 रुपये, जो इंडियन में होगा लगभग 600 रुपये, क्योंकि हर चीज़ का रेट उस हिसाब से ही होता है, क्योंकि जो भी सारा राशन का आइटम है सब फ्लाइट से आती हैं, और जो फ्यूल का जो आइटम होती हैं जैसे कि सिलेंडर हो गए या फिर और केरोसिन हो गया, तो वो फ्लाइट से अलाउड नहीं होता, वो सब लैंड से लेके आना पड़ता है, पोनीज या फिर आदमी बंदे उसको ढो के लाते हैं। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे चीज़ों का रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो गाइज़ ये है छोटा सा प्यारा सा जगह जिसका नाम है लुकला, और यहाँ पे मेरा जो लॉज है इसके यहाँ पे एक मैप बना हुआ है जिसमें हमारे को पूरा पता लगता है कि कैसे क्या क्या है इस पूरी जगह में। तो ये जैसे कि दिखा रहे हैं कि ये एक रनवे है और रनवे की यहाँ पार्किंग बनी हुई है, और पार्किंग के ऊपर जो ये 1 नंबर दिख रहा है, तो 1 नंबर मतलब हिमालयन लॉज। तो ये है मेरा लॉज, और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे करीबन 40 और होटल है, नंबर से मार्क किया हुआ है, इतने इतने नंबर्स है। और फिर एक रास्ता दिखा रखा है, एक मैप है एक तरीके का, और यहाँ पे बनी हुई है ये लुकला की मोनेस्ट्री है, और कुछ स्कूल है, यहाँ पे दिखा रखा है कि ये मार्केट है, और इधर पोस्ट ऑफिस है। तो इस पूरे एक बोर्ड पे पूरा एक नक्शा बनाया गया है लुकला का। और अगर मैं यही नक्शा मैं अपनी आंखों से देखना चाहूँ तो ये सामने मुझे यहाँ से सब चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ से मुझे एयरपोर्ट भी दिखाई देता है, यहाँ से मुझे रनवे भी दिखाई देता है, और यहाँ से मुझे वो सब होटल्स भी दिखाई देते हैं, और अगर मैं दूर देख पाऊँ तो मुझे मोनेस्ट्री भी दिखाई देती है। Before 1963, Lukla was a small, tiny village, and even local people don't come in this village. It's very remote place. And then actually, sorry, Edmund Hillary, who climbed Mount Everest in 1953, he wanted to build a small airstrip nearby somewhere where there's possible. And first he made a kind of a survey in Kharka. There was a kind of plain ground, but this survey showed that this is not feasible for airfield because there is a crosswind. Okay. So the airplane cannot take off or land. There can be problem. And then suddenly one guy from this area said, well, maybe Lukla will be feasible, better place, better option. And then they made a survey here at Lukla, and then it was the right place. Okay. With the wind direction and also the landing and take-up, it was quite suitable for airlines, aircraft, and then Sir Edmund bought lands. And during that time, the
current airport was just half size, just as half runway. It was just possible for a small player to spotter. Okay. It was all muddy and maybe on the grass. During that time, it was like a bushy world. But these lands belongs to local inhabitant, and then Soviet bought all those necessary lands from the local people. Then Soviet himself and his voluntary team from New Zealand started digging the bushes, started clearing up all these bushes, and then it took about a year. And then in 1964, then finally became in operation. Okay. And at that time, well, they made a small test by Pilatus spotter. It was feasible, and then the Twin Otter, during that time, there's a kind of small aircrafts. They landed here. Smaller than Twin Otter? Yes, that was French aircraft, but similar to Twin Otter, and landed here. And then our former king, that time he was crown prince. At the same time, he also built a school yesterday while we visited. He built 2 classroom school there. And the former, our king, late king Birendra, he was crown prince. He made first visit to this region, and he inaugurated the school there and also airfield here. And well, after that, tourism started in this valley. Before that, hardly 1 or 2 expeditions used to come in a year, but once the airfield is available here, then tourism started coming here. And at the same time, later Nepal government invested or extended the airport larger 2 times. And now this is the final, and now, well, you can see we have many tourists coming in out, and also many flights are coming. And nowadays it's off season, but let's say in March, April, May, this airport will be very busy. Again, September, October, November, December will be very busy. Well, sometimes there will be about 50 to 60 flights a day, plus 30, 40 helicopter flights. So actually, this airport has been very, very great development in this region. If Soviet didn't build the airport, we wouldn't have reached on this position. I mean, everything would have been still remote. Maybe some tourist movement, but not so many or not so good as we are having now. इस एयरपोर्ट के चारों तरफ ना इस टाइप की फेंसिंग हो रखी है, और मैं इसी फेंसिंग के आसपास ही घूम रहा हूँ थोड़ा एयरपोर्ट के, और मतलब अलग अलग एंगल से इसको देखने के लिए और कुछ वीडियोस बनाने के लिए। और आसपास सब ऐसे होटल बने हुए हैं, होटल हैं, घर हैं लोगों के, जैसे कुछ ये हो गया, और गाँव की पतली सड़कें। अभी ये प्लेन आया है समिट एयर का, भाई ऐसे एक ही जाली पे खड़ा होके इसकी थोड़ी फोटो और वीडियो बना रहा है। And I heard that when this runway was under making, then because there were no machines, so people used to make it with their legs. They used to walk to make it plain. That's true. Like that? That's true. And what happened was during that time we didn't have any road access, of course. Even we couldn't bring any big helicopter or not available. So it's not possible to transfer big machines for construction. And these half runways are built by hand and plug. And what Soria did is, he gave certain training to the local people. They have to dance, they have to walk in a group up and down, and then just to make plane. Yeah, and then same time, usually in October, we are harvesting grass.
and those grass from other side of the valley, the Soviet requested to bring to Lukla and dry the grass in the airfield, so where the seed can, goes there, and the Soviet president extra allowance to bring the grasses here, dry a couple of days, and then the natural grass grown up here. But after a few years, it didn't work so properly, and then later Soviet also brought a special grass seed from New Zealand, or I don't know, from somewhere, and then we had a green grass airfield here, but now it's blacktop. And I think in year 2001, this was properly tiled with the black. Yes. Black tarps. Yeah. तो गाइस ये है हिमालयन लॉज, ये है लुकला का एयरपोर्ट, और इसके पीछे ही है ये ग्रीन तारा का टेंपल, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। जो पसांग जी हैं उनका, जिनका ये लॉज है, उनकी बहुत स्टोरी जुड़ी हुई है। क्योंकि आज से 6 साल पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल होता था, एक छोटा सा फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल होता था। पूरे लुकला का सिर्फ एक यही हॉस्पिटल था, और इसको संभालते थे पसांग जी। तो लेकिन उसके बाद यहाँ पे स्विस एड से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया, और वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। इस रिज के उस साइड पे एक स्विस एड से बनाया गया हॉस्पिटल है। तो उसके बाद जो ये ज़मीन थी जहाँ पे ये छोटा सा हॉस्पिटल हुआ करता था, वो थी पसांग जी के नाम पे। तो इन्होंने एक यहाँ पे एक टेंपल बनवाया, सो दैट जो ये लुकला का बिजी एयरपोर्ट है, इसकी एक देख रेख हो सके, एक देखभाल हो सके, और कोई एक इस पर आशीर्वाद रहे। तो उसके लिए इस ग्रीन तारा का यहाँ पे टेंपल बनाया गया था, और काफ़ी सुंदर टेंपल है ये। और मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी सारी, देखो यहाँ पे एक तो देवी की मूर्ति है, उसके साथ एक आसपास 21 मूर्तियाँ और हैं, जिससे इनको और पावर मिलती है, और इस पूरे एरिया की इस रीजन को एक ये ब्लेसिंग दे पाते हैं। और यहाँ पे अगर हम अंदर की साइड जाते हैं तो यहाँ पे अंदर की साइड में भी ऊपर अगर देख पा रहे हो, तो ये जो पसांग जी के फादर हैं और मदर हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, यानी सोनम जी के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की फ़ोटो लगी हुई है। तो यहीं से ही इनका लॉज भी दिखता है, और पीछे भी काफ़ी कुछ इसमें तिब्बती में लिखा हुआ है। आई डोंट नो इतना क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे उन्होंने थोड़ी सी इसके बारे में स्टोरी बताई, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके और ये चीज़ जान के। इट्स अ बिग टेम्पल, आई थॉट इट्स जस्ट this building. It is 6 years ago. So before there used to be a Where is hospital? my help post? Yes. A health post, okay. This is my help post. And after closing the help post, we decided to build a temple. Build a there. temple. And actually, this protection goddess. So we believe we're very busy airport, and if there's a protection goddess Okay. on So that top, then that will keep blessing and keep blessing and take care of. take care. Yeah. And what do you call it in the local language? This is Aryatara. 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 English green tara. Green Tara. Yeah. Okay. So this was made 3 years ago, 6 years ago. Yeah, now 6 years ago. 6 years ago. Yeah. Okay. Actually, this is, Okay. And I heard that some of your land was used to be yours, and now it's a part of the airport. that's true. Well, actually, it was a bit slope from my current side down. It was very slope, and but I gave certain piece of land to the airport construction because they needed certain space. So I gave certain land free of cost, and also the airport construction, the contractor transported all the soil here to my area and made this ground plane. Yeah. तो लुकला में एक लोकल बाज़ार लगता है, अभी मौका मिला मेरे को उसमें जाने का। एक वीक बाज़ार होता है इसको बोलते हैं। तो ये इस टाइप का कुछ बाज़ार। Now it's almost over. Almost over, yeah. This is from Lord Valley, being the airport all and sell here. Okay, they come from the nearby villages? Yeah, it's 2 cities walk from Lord. Okay. Yeah, well, vegetable, fruit, and sell here. Okay.
नाम छ बजार. Okay. Okay, they go there as well. Yes, right, yeah. Every Friday and Saturday नाम they are working market नाम छ बजार. Okay, and Thursday in Lukla. Yeah, right, yeah. Okay.